Hello students, good morning. Welcome you all on Unacademy, India largest learning platform. आज हम डिस्कस करेंगे मर्ज सॉर्ट। अपने लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज मुकेश कुमार एंड फॉर गेट सीएससी स्टूडेंट्स फ्रॉम 8th of Feb फॉर गेट 2022 नया बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें आपको रविंद्रा सर, सुब्बा राव सर, मलेशम सर, विश्वदीप सर, संचित जैन सर, श्वेता कुमारी मैम यहाँ पढ़ाने वाले हैं। राइट, तो आपका बैच स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 8th of Feb। तो जल्दी से ज्वाइन करें इस बैच को। जितना जल्दी अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। सो ज्वाइन फ्रॉम 8th of Feb for GATE 2022 students. Right, join the batch. The batch starts from 8th of Feb. Yes. So this side Mukesh Kumar completed masters from ITISM Dhanbad. दिस इज अनअकैडमी लर्निंग ऐप। आप इसे डाउनलोड करें क्योंकि इसको डाउनलोड करने के बाद जो आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं वो है लाइव लेक्चर्स प्लस टेस्ट सीरीज। तो डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप। एक बार आपने अनअकैडमी पे कोई भी प्लान को सब्सक्राइब कर लिया तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। आपको डेली लाइव क्लासेस मिलने वाली है, स्ट्रक्चर कोर्स मिलने वाला है यहाँ पे, नेक्स्ट लाइव टेस्ट एंड क्विजेस भी मिलने वाली है, प्लस द मोस्ट बेनिफिट इज अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ ऑल द वीडियोस। सभी मेंटर के सभी वीडियोस को आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम एक्सेस कर सकते हैं। सो वी हैव टू प्लान्स फॉर यू, वन इज प्लस एंड आइकॉनिक प्लान। एक्चुअल में आइकॉनिक प्लान एडवांस प्लान है प्लस का, जिसमें प्लस प्लान के सभी बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, प्लस आपको पर्सनल डेडिकेटेड कोर्स प्रोवाइड किए जाएंगे जिनके साथ आप अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को बना सकते हैं, अपने डाउट को क्लैरिफाई कर सकते हैं। आपको यहाँ मिलने वाला है स्टडी ट्रैकर, प्लस आपको यहाँ मिलने वाले हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन एंड सेशन आंसर प्रैक्टिस सेशन, राइट, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। सो इफ वी टॉक अबाउट द प्लस प्लान में आपको डेली लाइव क्लासेस मिलने वाली है, स्ट्रक्चर कोर्स मिलने वाला है, लाइव टेस्ट एंड क्विज़ की फैसिलिटी मिलने वाली है, प्लस अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ ऑल द वीडियोस। सो दीज आर द टॉप एजुकेटर्स, इनकी गाइडेंस में आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। सो इफ वी टॉक अबाउट द प्लस प्लान में आपको बेनिफिट मिलेगा इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से सीखने का मौका, इंटरेक्टिव क्लासेस में स्ट्रक्चर कोर्स एंड पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, प्लस आपको यहाँ मिलने वाला है लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। अगर हम आइकॉनिक प्लान की बात करें तो प्लस प्लान के सभी बेनिफिट्स आपको यहाँ मिलने वाले हैं, प्लस आपको डेडिकेटेड कोर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस आपका होगा, स्टडी प्लानर दिया जाएगा एंड द कंप्लीट मटेरियल भी आपको दिया जाएगा। फाइन। So if we talk about the fee structure, that is 3250 for 12 months, 38,500 for 18 months, and 44,000 for 24 months. And after discount, it will be 27,225 for 12 months, 34,650 for 18 months, and 39,600 for 24 months. But you have to use my code MukeshYT. So please use my code MukeshYT. So if we talk about the iconic plan, that is 50,250 for 12 months and 74,000 for 24 months, and after discount 45,225 for 12 and 66,600 for 24 months. And again you have to use my code MukeshYT, राइट, मुकेश वाईटी। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यूज करें मेरा कोड मुकेश वाईटी। एंड द अनाउंसमेंट इज फ्रॉम दिस 8th of Feb, फ्रॉम 8th of Feb बैच सीएससी का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें आपको रविंद्रा सर, रेड्डी सर टीच करने वाले हैं फॉर गेट 2022, राइट। सो यूज करें कोड मुकेश वाईटी, यूज करें मेरा कोड मुकेश वाईटी टू गेट 10% डिस्काउंट। स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। अपने लेक्चर आज हम डिस्कस करने वाले हैं मर्ज सॉर्ट। अगर हम बात करें प्रीवियस लेक्चर की, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्स्ट जो डिस्कस किया था दैट इज पावर ऑफ एन एलिमेंट, पावर ऑफ एन एलिमेंट, फाइन, यूजिंग डेक। हमारा डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक का चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। लास्ट लेक्चर में हमने पावर ऑफ एन एलिमेंट को डिस्कस किया था। सो व्हाट इज द time complexity of power of an element? Order of log n using DAC, right? And without DAC order of n. Next second one हमने find out किया min max problem, and in min max the time complexity using with DAC and without DAC is order of n. Fine, with DAC and without DAC is order of n, but
बट कैन यू जस्ट टेल मी विदाउट डैक नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने थे? टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन, कैन यू जस्ट टेल मी व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन विदाउट डैक? 2n minus 2, and with DAC number of comparisons, with DAC number of comparison, case 1 is when number of elements are even, and second case is when number of elements are odd. Fine. Now can you just tell me what is the answer? In case of even it is 1.5n minus 2, and in case of odd 1.5n minus 1.5n. Fine. And the third problem is linear search, and the best case running time is constant, and the worst case is order of n. फाइन, आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले बाइनरी सर्च. यस, बाइनरी सर्च, एंड देन वी विल मूव ऑन द टॉपिक मर्ज सॉर्ट. तो बाइनरी सर्च बहुत ही अच्छा टॉपिक होने वाला है. यहाँ काफी क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं. तो प्लीज यहाँ एक बार पहले हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे विद इन 2 to 3 minutes, देन हम प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच स्टार्ट करेंगे. यस, बाइनरी सर्च, again it is a searching technique which use divide and conquer technique. Now point is binary search is fully divide and conquer technique? देखते हैं इसे. नाउ बाइनरी सर्च में क्या होगा? अगर हम लीनियर सर्च की बात करें तो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ एन. अब बाइनरी सर्च ने क्या कहा कि आई डिक्रीज द सर्चिंग टाइम फ्रॉम ऑर्डर ऑफ एन टू ऑर्डर ऑफ log n, from order of n to from order of log n. But when the condition is, can you just tell me what is the condition to apply the binary search? Input always be sorted. Input always be in sorted order. फाइन, इनपुट क्या होना चाहिए? हमेशा sorted होना चाहिए. Input always be in sorted order. क्लियर है पॉइंट? क्लियर है? वेरी गुड. अगर आपका इनपुट सॉर्टेड है तभी आप बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकते हो. यू कैन अप्लाई द बाइनरी सर्च इफ एंड ओनली इफ इनपुट इज सॉर्टेड. फाइन. नेक्स्ट, सपोज माय इनपुट इज 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 and 80, and I want to search an element, suppose that is 40. I want to an element that is suppose 40. लीनियर सर्च में क्या था? मैंने 40 को 10 के साथ कंपेयर किया, 40 को देन 20, 40 को 30, 40 को 40. लीनियरली सर्च करूंगा. बट कैन यू जस्ट टेल मी व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू सर्च एन एलिमेंट x इज इक्वल टू 40? यस, एनीवन? अब बाइनरी सर्च क्या कहेगा? जस्ट सी दिस. बाइनरी सर्च क्या कहेगा? बाइनरी सर्च क्या कहता है कि आपको लीनियरली सर्च नहीं करना. यू हैव जस्ट फाइंड द मिडल एलिमेंट. You have to find the middle element. What is middle element? Suppose this is index number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So how to find the middle element? Middle index. So I plus j by 2. 1 plus a by 2, which is going to be 9 by 2, which is going to be 4.5. You can take either 40 or 50, either index 4 or either index 5 as a middle index. So suppose we are considering the floor value. So it will be like 4. So find the middle element. How much time it will take? Can you just tell me how much time it will take to find the middle element? How much time it will take? Anyone? It will take constant time. It will take constant time. Why we are not searching linearly? Because input is sorted. No need to search linearly. Fine. Next हमें क्या करना है? हमारा जो एलिमेंट है x, उसको कंपेयर करना है एरे के मिडल एलिमेंट के साथ. हाउ मच टाइम इट विल टेक? अगेन ऑर्डर ऑफ कांस्टेंट. अगेन ऑर्डर ऑफ कांस्टेंट. क्या आपका एलिमेंट मिडल एलिमेंट के इक्वल है? आपको 40 सर्च करना था, एंड 40 इज योर एलिमेंट, एंड 40 एलिमेंट इज इक्वल टू मिडल एलिमेंट. सो हाउ मच टाइम इट विल टेक? ओमेगा ऑफ
constant time. Constant plus constant is constant. So in best case, the running time of binary search is constant. Are you getting my point? The best case running time is constant, or the running time is omega of c, or the running time is omega of c, right? Very good. But in worst case देखते हैं worst case में क्या होगा. Yes, is it clear or not? Please reply, is it clear or not? Next, second, in worst case, suppose I have an sorted array 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, and 90. And the index of the array is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Today at 6 o'clock अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे मैं डीबीएमएस को रिवाइज करवाने वाला हूँ विद क्वेश्चंस. राइट, डीबीएमएस को रिवाइज करवाने वाला हूं विद क्वेश्चन. सो प्लीज अटेंड द सेशन एट अनअकैडमी लर्निंग ऐप एट 6 o'clock. फाइन, एट 6 o'clock प्लीज अटेंड द सेशन. आज हम गेट 2021 के लिए कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं. फाइन, एट 6 o'clock. राइट, now suppose I want to search an element that is 200. I want to search an element that is 200. फाइन, नाउ सबसे पहले मुझे क्या करना है, बिकॉज इनपुट सॉर्टेड है तो मैं बाइनरी सर्च को अप्लाई करने वाला हूं. बाइनरी सर्च के लिए सबसे पहले मुझे मिडिल एलिमेंट निकालना होगा. मिडिल एलिमेंट इज 1 प्लस 9/2 विच इज गोइंग टू बी 5. इट मींस इंडेक्स नंबर 5 इज योर मिडिल इंडेक्स. सो कंपेयर फर्स्ट पॉइंट हमने किया, कितना टाइम लग गया, ऑर्डर ऑफ सी. नेक्स्ट हमने क्या फाइंड आउट किया, इज x इज इक्वल टू a ऑफ मिड. is x is equal to a of mid? No, false. Again इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगा, constant. Now third comparison, is x is greater than a of mid or x is less than a of mid. फाइन, और या तो x ग्रेटर होगा क्योंकि इक्वल तो है नहीं, या तो x जो आपको एलिमेंट सर्च करना है वो मिडल एलिमेंट से बड़ा होगा या छोटा होगा. राइट, फाइन. x 200 is greater than 50. yes, is 200 is greater than 50. अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मूव अप्लाई अगेन बाइनरी सर्च, अप्लाई बाइनरी सर्च on the array A from the index mid plus 1 to j. And if the condition is false, then apply again binary search in an array from index I to mid minus 1. और यहां हमने क्या स्टार्ट किया था, बाइनरी सर्च स्टार्ट किया था एक एरे जिसका इंडेक्स स्टार्टिंग इंडेक्स I है, लास्ट इंडेक्स j है. ये पॉइंट समझ में आ रहा है बच्चे? इज इट क्लियर? फाइन. तो देखो बच्चे अब क्या हुआ, यस, फर्स्ट कंडीशन ट्रू हुआ मेरा, x इज ग्रेटर देन मिडल एलिमेंट, तो मेरे को वापिस से अप्लाई करना है बाइनरी सर्च फ्रॉम द इंडेक्स 6 to 9. बट व्हाट अबाउट दीज एलिमेंट, व्हाट अबाउट एलिमेंट्स which are left of middle element? No need to compare with these elements, ignore these elements. It means just by seeing the middle element, I'll ignoring almost n by 2 element. Just by comparing with the middle element, I'm able to ignore almost n by 2 element. Is it clear or not? Is it clear or not? Just by comparing the middle element. Right. So again, it means next iteration के लिए आपके पास इनपुट कितने होने वाले हैं? सबसे पहले n इनपुट थे, आपने कंपैरिजन किया मिडल के साथ, चेकआउट किया कि छोटा है या बड़ा है आपका एलिमेंट मिडल से, देन आपने ऑलमोस्ट n by 2 एलिमेंट को इग्नोर कर दिया. इज इट फाइन? वेरी गुड. अगेन अप्लाई द बाइनरी सर्च, अगेन अप्लाई द बाइनरी सर्च. व्हाट इज द प्रोसीजर? फाइंड मिड. Mid is equal to, now starting index is 6. Now starting index is 6. Last index is 9. That is 6 plus 9 by 2. That is 15 by 2. Approximate 7.5. You will take 7 or 8.
right? Suppose 8, right? Right. Now check, is middle element is your element or not? Is middle element is your element or not? You want to search an element 200, you want to search an element 200, but middle element is 80. No, false. To find the middle element take constant time, and comparison also take constant time. Fine. Now, third point, can you check is x is greater than a of mid or less than a of mid? It is greater than a of mid. Fine. So again apply the binary search from a mid. What is your mid? 8. 8 plus 1, 9 to last index 9. Again you have to apply the same condition. Right? Now, now it means what middle element is your element at index 8. What about remaining left of these elements? Again ignore these, राइट, नो नीड टू कंपेयर विद दीज एलिमेंट. तो इट मीन्स आपके पास n/2 एलिमेंट्स थे, उनका भी हाफ n/2 स्क्वायर एलिमेंट्स को आपने इग्नोर किया फॉर द नेक्स्ट इनपुट. यस, इज इट क्लियर और नॉट? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. नेक्स्ट, next. So my input is 9. Find the middle element. Again starts applying the binary search. What is mid element? Mid element is I plus j by 2. 9 plus 9 by 2 is 9. Yes. Compare x is equal to a of mid or not. No, you want to search an element 200, but middle element is 90 now, right? Because in an array we have now single element, and that is the middle element. Fine. So again you have to check, is x is greater than a of mid? Yes, x is greater than a of mid. Apply binary search to right hand side, but there is no element on right hand side. Fine, there is no element on right hand side, so stop the algo. तो आपने कितनी बार कंपैरिजन किया, कितनी बार फाइंड आउट किया? एक बार मिडल एलिमेंट, एक बार नेक्स्ट मिडल, देन नेक्स्ट मिडल, अप्रोक्सीमेट 3 कंपैरिजन. इन ईच पास सम कांस्टेंट नंबर ऑफ कंपैरिजन, और कांस्टेंट नंबर ऑफ कंपैरिजन आपने कितने टाइम्स किया है? 3 टाइम्स किया है. Fine. Yes, it means now move on the recurrence relation of binary search. In recurrence relation, what is my input size? First of all, T of n is equal to number of comparisons required to search an element. T of n. Can you just tell me which of the following recurrence is true? 2Tn by 2 and always take some constant time. Is it true or false? Is it true or false? Yes, just reply, is it true or false? You want to search an element, T of n is equal to 2Tn by 2 plus C. Is it the correct recurrence relation for binary search or not? Yes. Can you just tell me, is it the correct one or not? Can you just tell me, is it the correct one or not? The given recurrence relation is correct one or not for the binary search? T of n is equal to 2Tn by 2 plus C. Is it the correct one? Is it the correct one or not? नो, बिकॉज अगर आपका इनपुट सॉर्टेड है तो एक बार आपने जब मिडल एलिमेंट को फाइंड आउट किया, नो डाउट आपने एरे को 2 ऑलमोस्ट इक्वल हाफ में डिवाइड किया. फाइन. बट क्या आपने बाइनरी सर्च दोनों साइड अप्लाई किया? नो. आप ये चेक करोगे कंडीशन कि आपका जो एलिमेंट है क्या वो मिडल एलिमेंट है तो रिटर्न किया, नहीं हुआ तो या तो आपका एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड हो सकता है या राइट हैंड साइड हो सकता है. यस, एरे को आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, बट पॉइंट इज नेक्स्ट इटरेशन के लिए जो इनपुट था वो दोनों साइड का इनपुट नहीं था, या फिर आपने बाइनरी सर्च दोनों साइड अप्लाई नहीं किया है. यस और नो? आपने सिर्फ वन साइड इनपुट को अप्लाई, बाइनरी सर्च को अगेन अप्लाई किया. इट मींस एंड द इनपुट साइज ऑफ इनपुट साइज इज एट दैट टाइम इज t of n by 2, not 2tn by 2. Fine. So the correct recurrence relation is
T of n is equal to T of n by 2 plus C for comparison. Plus C constant time will take for comparisons. So if we solve this recurrence relation, now T of n by 2 square plus C plus add this C, which is going to be T of n by 2 square plus 2C. Now again apply iteratively, substitute T of n by 2 cube plus C plus T plus C. Can you just tell me what is the final answer? Can you just tell me what is the final answer? So if we apply K times, as we already know, T of n by 2 की power k plus kc. Yes or no? Which is going to be T of n by n plus ck, which is going to be T of 1 plus c dot k, which is going to be 1 plus c dot. The value of k is log n. So the final answer is order of log n. इट मीन्स अगर आपको कोई भी एलिमेंट सर्च करना है एंड इनपुट sorted है, you just try the binary search. Can you apply the binary search? Is it possible or not? Fine, no need to apply directly linear search. First of all, apply binary search. Is it possible that with the help of log and time you can solve your problem? Yes, then go with that. No need to directly solve the problem using linear search if input is sorted. Yes or no? Yes. Have you any doubt? So always try to apply the binary search if you want to search an element and input is sorted. No need to apply the linear search directly. Fine. Yeah, if input is not sorted, then you may try. First of all, you have to sort the input and then try to search the element using binary search. Yes. Is there any doubt? Shall we proceed further? क्या किसी को कोई डाउट है? Please reply so that we'll continue our topic. Very good. Very good. So, oh, the final answer is binary search को apply करने का worst case time is order of log n and best is omega of constant. Now move on some problems related to binary search. Right? First problem, problem number one. Input, input, a sorted array of n element, a sorted array of n element. Output, you want to find two element, that is a plus b, which is less than c, where c is some constant, where c is some constant. Can you just tell me what is the total time to find two element of your array whose summation is always less than equal to c, where c may be anything. C is a constant and it may be anything. And given data is a sorted array. A sorted array. Keep in mind. So can you just tell me what is the minimum time required to find two element whose summation is always less than equal to some constant c? Can you just tell me what is your answer? Just try once. Yes, just try once. Again, you just think about the binary search. Can you apply the binary search and how you can apply the binary search? In binary search, no need to search linearly. Move on the direct middle element, then try to compare the middle element, then find either you have to move on left side or right side, right? So just try to solve using binary search. No need to apply the linear search because the input array is sorted. So can you just tell me what is the final answer or what is the final running time to find two elements and whose summation is always less than equal to some constant c where input is sorted array? Yes. Today in the evening at
6 o'clock approximately. I'll tell you the exact time. At 6:30. Today at 6:30. Yes, what is your answer? Can you just tell me what is your answer? Input is sorted array. In that sorted array, you have to find two elements. That is, one is A and the next one is B. And if you sum up both the elements, then it there's some value always less than equal to constant. How can you find? And what is the total time? Just try once. Tell me the answer. Just try once. Your solution may be anything. It may be order of n, it may be order of log n, it may be constant. Just try once and send me the solution so we can identify. Yes. Okay. Listen. Yes. Okay. So just think like that. We have a sorted array. Suppose 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Fine. Now, constant may be anything. Suppose first C1 constant is my 5, next C2 40, next C3 80, and next constant is 200. Fine. कुछ भी कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है. फाइन, मुझे दो ऐसा वैल्यूज निकालना है इस एरे में जिनका समेशन करूं तो वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू लेस देन आई सी सी. फाइन. अगर फर्स्ट केस में क्योंकि इनपुट सॉर्टेड है, कैन यू जस्ट टेल मी वो दो एलिमेंट कौन से होंगे जिनका समेशन सबसे कम होगा? कैन यू जस्ट टेल मी वो दो एलिमेंट कौन से हैं जिनका समेशन करूं तो सबसे छोटा होगा, सबसे कम आएगा? कैन यू टेल मी द टू एलिमेंट्स इन अ sorted array? The array is sorted in ascending order, right? So can you just tell me which of the following two elements whose summation is always the minimum one? First two element. First two element, right? Or either take first element two times. अगर हम डिस्टिंक्ट एलिमेंट की बात करें तो फर्स्ट टू एलिमेंट का ही सम सबसे छोटा आने वाला है. यस और नो? द समेशन ऑफ these two value is 30. 10 plus 20 is equal to 30. Is 30 is less than 5? Is 30 is less than 5? No. It means no element exists. No A and B exist. How much time it will take? How much time it will take? Just constant time. Go to first two element, add them and just compare.
Fine. In an array, we randomly we move to any position, right? Yes. So it will take constant time. Constant time में आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि फर्स्ट टू एलिमेंट आर द स्मॉलेस्ट वन, राइट? सो फर्स्ट केस में कितना टाइम लगा आपको? कांस्टेंट. सेकंड केस 30. Is 30 is less than 40? Yes, it means we have two element. One is 10, next is 20, whose summation is always less than equal to C, if possible. और भी केस हो सकते हैं अगर पॉसिबल हो, लाइक इन हाउ मच टाइम इट विल टेक? अगेन कांस्टेंट. नेक्स्ट, अगेन 30. 30 इज लेस देन 80? यस, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था स्टेटमेंट में कि मुझे वो दो नियरेस्ट एलिमेंट चाहिए ए और बी जो सी से छोटे हों जिनका समेशन. मैंने तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज जस्ट फाइंड टू एलिमेंट, just find two element whose summation is always less than equal to c. And in a sorted array, the summation of first two element is always the minimum one. Yes or no? Yes or no? Just reply yes or no. Are you getting my point? Very good. So again it will take constant time. Next again 30. Is 30 is less than 200? Yes. How much time it will take? Constant. There are other possibilities also like 20 plus 30, 20 plus 40, 20 plus 50. Right? But I just want to find two random elements, that is A and B, from the given array whose summation is always less than equal to C if these elements present. So what is the total running time of this problem is constant time. Just visit the first two element, add their sum, add them, right? तो अगर आपको एक sorted array में दो ऐसे एलिमेंट निकालना है जिनका समेशन हमेशा कांस्टेंट, एक कांस्टेंट से छोटा आए, it will always take constant time, and the approach is move to first two element. Any doubt? Yes, anyone? Any doubt? Right. In the same manner, can you just tell me if my input is a sorted array of an element? If my input is a sorted array of an element and the output is find two element A and B whose summation is always greater than C. Can you just tell me what is the total running time? Input is a sorted array of n element. Input is a sorted array of n element. Can you just find two element A and B whose summation is always greater than C? How much time it will take? Yes, how much time it will take? Please tell me how much time it will take. Again, input is sorted. Input is sorted and we want to find two element whose summation is always greater than C. How much time it will take? Any idea? Input is a sorted array. Input आपका sorted है. Just by taking the example, input is sorted array and we have to find two element A and B whose summation is always greater than equal to C. Greater than C, not equal to, greater than C. Can you just tell me what is the total running time in this case? What is the total running time in this case? Yes, yes, yes. Tell me, tell me. I'm waiting for your answer. Can you just tell me?
Suppose we have element 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, and 80. Right? We want to find two elements whose summation is always greater than C. Suppose my C is 5, my C is 40, my C is 150, and my C is 1000. Right? C may be anything. In this case, if you want to find two element whose summation is always greater than C, वो मेरे sorted array में वो दो कौन से एलिमेंट होंगे जिनका समेशन सबसे बड़ा होगा? अगर मैं उन दो एलिमेंट्स को ऐड करूं तो उनका समेशन सबसे बड़ा होगा। कौन से वो दो एलिमेंट हैं? लास्ट टू एलिमेंट इन sorted array. Array must be sorted. अगर एरे sorted है तो लास्ट के वो टू एलिमेंट्स होंगे जिनका समेशन हमेशा मैक्सिमम होगा एरे के अदर एलिमेंट के समेशन से। फाइन, दैट इज 80 प्लस 70 इज 150. Is 150 is greater than C? Yes. How much time it will take? Constant time. Now, is 150 is greater than 40? Yes. Again, it will take constant time. Next, is 150 is greater than 150? False. Again, it will take constant time, and you can return that no, there exists no two element whose summation is greater than C. And again, 150 is greater than 1000. False. Again, it will take constant time. It means you have to just identify the random two elements whose summation is always greater than equal to C if these two elements are present in your sorted array. Fine. So how much time it will take? Just add the last two element which will take constant time. Getting my point or not? Have you any problem? Have you any doubt? You can ask me. सी कुछ भी हो सकता है आपका, बस आपको दो एरे में से आपको दो वो एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं जिनका समेशन अगर प्रेजेंट है तो उनका समेशन ग्रेटर देन सी हो, ग्रेटर देन सम कांस्टेंट हो। कांस्टेंट आपके लिए इनपुट रहेगा। फाइन, वेरी गुड। नेक्स्ट, नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इज, the next important one is input. Input a sorted array. इस प्रॉब्लम को ध्यान से करना माय डियर। a sorted array of n element. A sorted array of n elements. आउटपुट, आपको आउटपुट क्या फाइंड आउट करना है? आउटपुट क्या फाइंड आउट करना है आपको? फाइंड two element A and B whose summation is equal to C. This is the most important problem. You want to find two element A plus B whose summation is always equal to C. Can you just tell me what is the final answer? What is the total running time to find two element in a sorted array whose summation is always equal to some constant C? क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि अगर आपको मैं इनपुट दूं एक sorted array, तो उस sorted array का जब आप summation करोगे तो how much time it will take? Yes, how much time it will take? How much time it will take? You want to find two element A and B whose summation is always equal to some C where C is constant. Where C is constant. And the input is sorted. Input is sorted. Can you just tell me what is the total time required to find two elements in your sorted array whose summation is always equal to some constant C? How much time it will take? Yes. How much time it will take? जल्दी से मुझे बताएं। How much time it will take?
Yes, can you just tell me? Fast, fast. You want to find two element in a sorted array whose summation is always equal to some constant c. How much time it will take? इनपुट इज सॉर्टेड, कीप इन माइंड, और आपको सर्च करने हैं दो एलिमेंट जिनका समेशन सी के इक्वल आए। इट मीन्स ये एक सर्चिंग प्रॉब्लम है, इनपुट भी सॉर्टेड है, तो क्या आप बाइनरी सर्च लगा सकते हो? यस और नो? यस, टेल मी। Can you apply the binary search, and can you just tell me the total running time if input is sorted array and you want to find two element whose summation is equal to c? Yes, fast. लॉजिक सिंपल सा आपको लॉजिक दिख रहा है बच्चे, इनपुट सॉर्टेड है तो ध्यान से देखो आंसर क्या होगा। यस, रिप्लाई करें, आंसर क्या होगा? इज इट log n, इज इट ऑर्डर ऑफ n, इज इट कांस्टेंट, इज इट n log n? Whatever may be, just reply your answer. यस, सपोज मेरे पास एक इनपुट है दैट इज सॉर्टेड इनपुट 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 and 80. Tell me, how can you find two elements? Suppose my C is, first of all, my C is 30, second my C is 90, and next my C is 200. How can you find out? Yes, yes, tell me. देखो कैसे करना होगा आपको। फर्स्ट लॉजिक क्या कहता है? फर्स्ट लॉजिक, लॉजिक वन, ध्यान से सुनो, लॉजिक वन क्या कहेगा। लॉजिक वन क्या कहेगा? आपने मान लो फर्स्ट एलिमेंट 10 ले लिया, लॉजिक वन, फर्स्ट आपने एलिमेंट 10 ले लिया, तो अब आपको कौन सा एलिमेंट फाइंड आउट करना है? मान लो ए आपका 10 है, मान लो ए आपका 10 है, तो आपको बी एलिमेंट फाइंड आउट करना है जिनका सम करो तो सी के इक्वल आए। सपोज करो मेरे को सी 30 चाहिए, तो बी क्या होगा? 20 हो जाएगा। यहां पर तो कांस्टेंट टाइम लग गया, यहां पर तो कांस्टेंट टाइम लग गया, बट सपोज सी इज 90, देन देन इट मींस a इक्वल टू 10 है, आपको 90 लेके आना है। इट मींस b कितना होना चाहिए? 80। नाउ फाइंड फॉर द 80। लॉजिक वन मींस b 20 हो सकता है, b 30, b 40, चेक फॉर 50, 60, 70 एंड 80। सो हाउ मच टाइम इट विल टेक? टिल नाउ ऑर्डर ऑफ n। सपोज करो आपका एलिमेंट अभी भी नहीं आया, आपके वो दो एलिमेंट अभी भी फाइंड आउट नहीं किए, तो कंसीडर a इज इक्वल टू 20। नाउ बी क्या हो सकता है? 30, 40, 50, 60, 70, 80, कुछ भी हो सकती है। सो टोटल नंबर ऑफ, टोटल टाइम n माइनस वन, असिम्प्टोटिकली ऑर्डर ऑफ n। सपोज ऐसे क्या करोगे? सपोज नाउ अगेन यू आर अनेबल टू फाइंड द टू एलिमेंट। नाउ a is 30, b is 40, 50, 60, 70 and 80। Again, how much time it will take? n minus 2, again order of n. Find, in this case n plus n minus 1 plus n minus 2 plus up to 1, which is order of n square। अगर आपने लीनियरली सर्च किया तो इट विल टेक ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर टाइम। yes or no? Fine, move to second logic।
Move to second logic. My elements are 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Fine. C may be 30, C may be 70, C may be 150 and C may be 1000. कुछ भी हो सकता है. सपोज करो A को आपने क्या किया माय डियर, बाइनरी सर्च से अप्लाई किया. इट मींस A क्या हो गया 40. सपोज करो A इज 40. तो B क्या हो सकता है, B क्या हो सकता है, B आपका 40. इस केस में क्या होगा, B A प्लस बी इज ऑलवेज इक्वल टू C, तो एक्स्ट्रा है, डायरेक्ट इग्नोर कर दिया आपने. पर 70 के केस में आपको भी कितना और चाहिए, 70 माइनस 40 30, तो वो क्या होगा, ए से छोटा है तो इस साइड अप्लाई करो. लीनियरली इस साइड अगर अप्लाई किया तो आपने क्या हो सकता है, बी आपका 30 हो सकता है, बी आपका 20 हो सकता है, बी आपका 10 हो सकता है. हाउ मच टाइम इट विल टेक. जब ए 40 था, दैट इज मिडल एलिमेंट आपने लिया, तो आपने चेकआउट किया कि अब सी माइनस ए कितना है, राइट right? अगर वो ए से बड़ा है तो आपको राइट हैंड साइड मूव करना है, अदरवाइज लेफ्ट हैंड साइड मूव करना है, और वहां पे आपने लीनियरली मूव किया. Yes or no? It will take again order of n by 2, approximate order of n. n by 2 आपने find out किया, n by 2 comparison, that is order of n. Next, next, next. Again अभी भी find out नहीं हुआ, तो अब आपने क्या किया, रिमेनिंग का मिडल निकाला. Yes, अगेन फिर अगेन बी ए आपने रिमेनिंग का मिडल निकाला, और बी आपने क्या किया बच्चे, अगेन लीनियरली चेक किया कि सी माइनस ए कितना हुआ, लेफ्ट मिडल से छोटा या बड़ा होगा वो उसका डिफरेंस, तो अगेन एन बाई टू स्क्वायर. इट मीन्स टोटल टाइम ये कितने टाइम किया, अगेन ऑर्डर ऑफ एन टाइम. फाइन. इट मीन्स एन लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. तो आपने एन स्क्वायर देख लिया, एन लॉग एन देख लिया. अब पॉइंट ध्यान से देखो बच्चे, थर्ड लॉजिक. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 and 80. Take one pointer P. Take next pointer Q. आपको क्या फाइंड आउट करना है, A प्लस बी किसके इक्वल आए, C के इक्वल आए. A प्लस बी C के इक्वल आए. आपने A लिया 10, B लिया 80. इज 80 प्लस 10 इज इक्वल टू यूर C और नॉट, नो. तो मान लो अगर नहीं है तो आपको चेक करना है कि C इज ग्रेटर देन 80 प्लस 10 प्लस 80 और C इज लेस देन 10 प्लस 80. अगर C बड़ा है इससे, इट मींस कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करना होगा आपको, A प्लस बी में कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करना होगा, तभी तो C के इक्वल जाने की पॉसिबिलिटी होगी. Yes or no? It means increment the pointer P. अदरवाइज अगर C छोटा हुआ, डिक्रीमेंट पॉइंटर Q. पॉइंट ये समझ में आया. आपको क्या करना है, एक पॉइंटर लिया आपने फर्स्ट इंडेक्स पे, एक पॉइंटर लिया आपने लास्ट इंडेक्स पे, उन दोनों की वैल्यूज का समेशन किया. अगर वो इक्वल टू सी है तो आपने ये ए और बी वैल्यू कंसीडर करके रिप्लाई किया. अदरवाइज आपने ये चेक किया कि अगर ये दोनों वैल्यूज का इक्वल सी के नहीं है, देन आपने चेक किया कि आपका जो अमाउंट है, सी जो अमाउंट है वो इससे ए प्लस बी से छोटा है या बड़ा है. अगर ए प्लस बी से छोटा हुआ, अगर मान लो कांस्टेंट सी इज लेस देन ए प्लस बी, इट मींस ए प्लस बी ग्रेटर है, इट मींस आपने कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर रखा है, इट मींस कुछ कम ऐड करना है, इट मींस डिक्रीमेंट क्यू. in that case decrement pointer q. and if c is greater than a plus b, it means c बड़ा है, आपको कुछ और ऐड करना होगा, it means increment p. so in the worst case p moves from first to last index, or q moves from last to first index, or maybe somewhat p is here again q is here, then cross. If the pointer cross to each other, it means solution not exist, it means solutions not exist. So in this case how much time, order of n, order of n. Yes, is there any doubt or not, is there any doubt or not, क्या आपको कोई डाउट है. फाइन, वेरी गुड. इट मींस ध्यान से देखो, कंक्लूजन क्या है प्रॉब्लम का.
इनपुट क्या है? सॉर्टेड एरे। इनपुट क्या है? सॉर्टेड एरे। अगर फर्स्ट आपकी प्रॉब्लम है, यू हैव टू फाइंड ए प्लस बी लेस देन सी, हाउ मच टाइम इट विल टेक? कांस्टेंट टाइम। अगर सेकंड आपकी प्रॉब्लम है, ए प्लस बी ग्रेटर देन सी, हाउ मच टाइम इट विल टेक? अगेन कांस्टेंट। बट अगर आपकी प्रॉब्लम है, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, हाउ मच टाइम इट विल टेक? ऑर्डर ऑफ एन। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? Yes, getting my point or not? How much time it will take? Order of C. Fine? Yes or no? So it will take order of n time. Very good. Now, next problem. Next problem. Input a sorted array. A sorted array of n element. ध्यान से देखना इस प्रॉब्लम को. A sorted array of n element in which n minus 2 elements are distinct. N minus 2 elements are distinct, and one element comes two times. One element present two times. And my problem is output. Find the repeated element. Find the repeated element. Find the repeated element. Can you just tell me the total running time? Input क्या है? Assorted array है n element का. N minus 2 एलिमेंट जिसमें डिस्टिंक्ट हैं, एंड वन एलिमेंट रिपीट हुआ है. कैन यू जस्ट टेल मी, कैन यू जस्ट टेल मी टोटल टाइम रिक्वायर्ड? कैन यू जस्ट टेल मी टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू फाइंड द रिपीटेड इन द एरे? Yes, anyone? Input a sorted array of an element. Output find the repeated element. In input, out of n element, n minus 2 elements are distinct and one element comes two times. Can you just tell me what is your answer? आपके पास इनपुट है एक सॉर्टेड एरे जिसमें n एलिमेंट हैं. आउट ऑफ n एलिमेंट, मान लो अगर आपके पास 10 एलिमेंट्स हैं, तो 8 एलिमेंट्स उसमें डिस्टिंक्ट हैं, यूनिक हैं. राइट? 8 एलिमेंट बिल्कुल अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट हैं, बट एक ऐसा एलिमेंट है जो दो बार आया है, मींस 8 प्लस 2 टोटल 10 एलिमेंट. तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि वो कौन सा एलिमेंट है जो रिपीट हुआ है वन टाइम. और इनपुट ध्यान रखना माय डियर, सॉर्टेड है, इनपुट सॉर्टेड है. इस केस में आपको सर्च करना है वो एलिमेंट जो रिपीट हुआ है. कैन यू अप्लाई द बाइनरी सर्च? कैन यू अप्लाई हियर द बाइनरी सर्च?
Is it possible or not? Yes, is it possible or not? Can you apply the binary search? Yes, what is your answer? Just tell me. We have to find the repeated element. We have to find the repeated element. Can you just tell me the total running time to find the repeated element in a sorted array? After that, we'll start the merge sort. ध्यान से देखो बच्चे, हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमारे पास एक एरे है 10, 20, 30, 40, 40, सपोज करो 50, 60 एंड 70, राइट? हमारे पास एक एरे है जो कि सॉर्टेड है, और इस केस में टोटल एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट हैं। आउट ऑफ 8 एलिमेंट 6 एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट कौन कौन से हैं हमारे पास? 10, 20, 30, 50, 60 एंड 70, फाइन। एंड रिपीटेड एलिमेंट कौन सा है यहाँ पे? 40। अब इनपुट जब सॉर्टेड है तो मैंने क्या किया? मिडल एलिमेंट फाइंड आउट किया। इंडेक्स क्या है मेरा? 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट? तो मिडल एलिमेंट, व्हाट इज मिडल एलिमेंट? 8 + 1, दैट इज 9, 9/2। यस, 9/2, 4.5, आइदर 4 और 5। आपने मान लो 40 लिया। अगर आपको ये चेक करना है कि आपने जो एलिमेंट फाइंड आउट किया है वो रिपीटेड है या नहीं है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? क्योंकि इनपुट सॉर्टेड है तो रिपीटेड एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट होगा? आइदर लेफ्ट, लेफ्ट भी सेम हो सकता है या फिर राइट भी सेम हो सकता है। क्योंकि एक एलिमेंट दो ही बार आया है, तो या तो वो रिपीटेड एलिमेंट लेफ्ट 40 का लेफ्ट भी 40 हो सकता है, या फिर दोनों नहीं हो सकते, या फिर 40 का राइट भी 40 हो सकता है। और सॉर्टेड है तो हमेशा एडजेसेंट ही होंगे रिपीटेड एलिमेंट। यस और नो? वेरी गुड। तो आपने मिडल एलिमेंट फाइंड आउट किया, आपने मिडल एलिमेंट फाइंड आउट किया, इट विल टेक कांस्टेंट टाइम। देन आपने लेफ्ट एलिमेंट फाइंड आउट किया मिडल का, अगेन इट विल टेक कांस्टेंट टाइम। देन आपने राइट एलिमेंट फाइंड आउट किया, अगेन इट विल टेक कांस्टेंट टाइम। इस केस में से आपने फाइंड आउट कर लिया कि यस, राइट ऑफ 40 इज 40, इट मींस 40 इज द रिपीटेड वन। हाउ मच टाइम इट विल टेक? कांस्टेंट टाइम। How much time it will take? Constant time. But that time is not the worst time. It is best time. It is the best time. Best case. Minimum time. Now, suppose my array is like 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, and 80. Can you just tell me that is index number 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Can you just tell me how to find the repeated element in that case? What is your middle element? 9 plus 1 by 2, that is 50. That is 50. What is left of 50? 40. What is left of right of 50? 60. It means middle element is the not repeated element. Now, अब बाइनरी सर्च कैसे अप्लाई करोगे? आपको आइदर लेफ्ट मूव करना है या राइट मूव करना है। कैन यू जस्ट टेल मी? यस, कैन यू जस्ट टेल मी कि अगर आपने मिडल एलिमेंट फाइंड आउट किया तो आप अब किस साइड मूव करोगे, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड? सम स्टूडेंट सेज दैट सर राइट हैंड साइड। हाउ यू विल डिसाइड दैट? आपने कैसे डिसाइड किया? बाय सीइंग द एलिमेंट। बट कंप्यूटर को तो नहीं दिखेगा ना, हमारे एल्गोरिथम को तो ये नहीं दिखेगा कि वो राइट हैंड साइड प्रेजेंट है। यस और नो?
It means just by seeing the middle element, we will identify that middle element is not the repeated one. Now we have to move either left subpart or right subpart. Binary search is unable to find. Binary search is unable to find that either I have to move on the left hand side or right hand side. Yes or no? I have to move on the left hand side or right hand side. Is it clear or not? Is it clear or not? Fine. It means you just apply linear search. Binary search not works here. Linear search, which will take order of log n time. Order of log n time. Yes or no? Which will take order of, sorry, linear search order of n time, not log n. Order of n time. Fine. वेरी गुड. सो ऐसे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स बाइनरी सर्च के बेसिस पे आ सकती है, राइट. तो आपको ध्यान रखना होगा. अगेन एक गेट गेट में प्रॉब्लम आया था. इन गेट अ sorted array of an element. A sorted array of an element. फाइंड आउट क्या करना है आपको. इनपुट था ये आपका. फाइंड आउटपुट आपको क्या फाइंड आउट करना है. फाइंड एन एलिमेंट विच इज नाइदर मिनिमम nor maximum. How much time it will take? आपके पास एक sorted array है n एलिमेंट का. आपको एक ऐसा एलिमेंट फाइंड आउट करना है जो ना तो मिनिमम हो ना मैक्सिमम हो. आप कैसे फाइंड आउट करोगे. हाउ कैन यू फाइंड एन एलिमेंट विच इज नाइदर मिनिमम नोर मैक्सिमम. आप कैसे फाइंड आउट करोगे. कैन यू जस्ट टेल मी how you will find an element which is neither minimum nor maximum in sorted array. 10, 20, 30, 40, 50. Fine. तो नाइदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम में अगर इनपुट डिस्टिंक्ट हैं सारे इनपुट, उस केस में मिनिमम 3 एलिमेंट आपके होने चाहिए, राइट. Sorted array में first one is minimum, last one is maximum, and these elements are neither minimum nor maximum, so it will take constant time. What about if input is an array, a simple array? How to find an element which is neither maximum nor minimum? In this case, how can you find? Take any three element. Take any three element, and out of the three element, one is the element. Out of these three element, one is minimum. That minimum is not the minimum of array element. It may or may be. Fine. So just by taking the three element, we have to find that an that element is neither maximum nor minimum. Fine. Yeah, again it will take constant time. This is the actual gate problem. जिसमें एक एरे था और एरे sorted नहीं गिवन था हमें, और हमें फाइंड आउट करना था एक ऐसा एलिमेंट जो ना तो मिनिमम है ना मैक्सिमम है. फाइन. ओके. सो हमने कंप्लीट किया बाइनरी सर्च. नाउ मूव ऑन आवर टॉपिक दैट इज मर्ज सॉर्ट. फर्स्ट सॉर्टिंग टेक्निक, मर्ज सॉर्ट. व्हाई? बिकॉज टू अप्लाई द बाइनरी सर्च, input should be in sorted order. Input should be in sorted order. So first of all, we need to sort our element. If we want to search an element, so we have to sort our element, then apply the binary search. So what is merge sort? Can you just tell me what is the input for merge sort? Input is an array. What is output? Sort the array. Sort the array. Fine. ये क्लियर है आपको. इनपुट एन एरे, आउटपुट सॉर्ट द एरे. अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, ध्यान से देखो. अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, ध्यान से देखो. कैसे करोगे, ध्यान से देखो.
सपोज करो मेरे पास 2 एरे हैं जो कि सॉर्टेड है। इस प्रॉब्लम को समझने से पहले, एक्चुअल सॉर्टिंग करने से पहले, सपोज दैट मेरे पास 2 एरे हैं जो ऑलरेडी सॉर्टेड है, राइट। मान लो 10, 20, 30 एंड 40। आपके पास 2 एरे हैं जो कि ऑलरेडी सॉर्टेड हैं, 11, 21, 31 एंड 41। आपके पास 2 एरे हैं जो कि ऑलरेडी सॉर्टेड है, फाइन। एंड एरे वन इज एरे ए, नेक्स्ट इज एरे बी। तो आपका गोल क्या है? आपका गोल है इन 2 सॉर्टेड एरे को एक न्यू एरे में सॉर्ट करना। दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, फाइन। तो आपने क्या किया, आपने एक पॉइंटर पी लिया फर्स्ट एरे पे, एक पॉइंटर क्यू लिया सेकंड एरे पे। कैसे सॉर्टिंग करेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले आपने कंपेयर किया 10 और 11, एक कंपैरिजन किया 10 और 11 में, कौन सा छोटा एलिमेंट, 10। तो 10 को न्यू एरे सी में रखा, इंक्रीमेंट पॉइंटर पी, इंक्रीमेंट पॉइंटर पी। नेक्स्ट किस में कंपैरिजन हुआ, 20 एंड 11 में, 20 एंड 11 में, विच वन इज स्मॉलर, 11। तो 11 आपने न्यू एरे सी में रखा एंड इंक्रीमेंट द पॉइंटर क्यू। जिस भी एरे का एलिमेंट सी में जाएगा उस एरे के एलिमेंट को, उस एरे के पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर दो। नेक्स्ट 20, 21, अगेन कंपैरिजन बिटवीन 20 एंड 21। कौन सा एलिमेंट जाएगा एरे में, 20। इंक्रीमेंट कौन सा पॉइंटर होगा, पी और क्यू, पी, फाइन। नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट 30 एंड 21, विच वन इज मिनिमम, 21। 21 यहाँ आया, yes or no, very good। next one, it means increment the pointer q। next comparison is between 30 and 31, 30 and 31, which one is minimum, 30, increment the pointer p, increment the pointer p। next comparison between 40 and 31, 31 आ गया, increment the pointer q। next comparison is between 40 and 41, कौन सा है एलिमेंट, 40, इंक्रीमेंट द पॉइंटर p। अगर आपने अब पॉइंटर p को इंक्रीमेंट किया तो ये अपनी बाउंड्री से बाहर चला गया, यस और नो। इट मींस अब रिमेनिंग एलिमेंट कहाँ है, q में। और क्योंकि q ऑलरेडी बी एरे में, और बी एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो जस्ट बाय कॉपी पेस्ट, राइट। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 41, कॉपी पेस्ट करना होगा, कंपैरिजन नहीं, नो नीड टू कंपेयर, यस और नो। So can you just tell me total number of comparison? One, 7 comparisons. How can I write the 7 comparison? Suppose an array has A has m element and B has n element. So total number of comparison is equal to m plus n minus 1. What is m? 4. What is n? 4 minus 1. That is 7. Yes or no? Total number of comparison m plus n minus 1, फाइन, m plus n minus 1। तो अगर m और n इक्वल हैं तो m plus m minus 1, 2m minus 1, order of m, or we can say order of n, it may be anything, yes or no। it means to sort, ध्यान से सुनना, it means to sort two sorted array, to sort two sorted array in a new array, it will take order of n time, yes or no। To sort two array in a new array, it will take order of n time, or order of m time, right।
Very good. This is the first case, that means worst case. What is the worst case time required to sort two sorted? A और B already sorted है और उनको sort करना है. Fine. Next case, best case. Next is best case. Suppose एक array है मेरे पास A, उसमें 10, 20 and 30 एलिमेंट है. एक न्यू array है B जिसमें 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. ये एक एरे ए है, ये एक एरे बी है. यस और नो? एक एरे ए है, एक एरे बी है. अब आप ध्यान से देखो, अब आप ध्यान से देखो, हमने सेम अप्रोच यूज किया. एक एरे, एक न्यू एरे में सॉर्ट करना है आपको. 10 और 40, 10 और 40 के बीच में जब आपने कंपेयर किया, 10 और 40 के बीच में आपने कंपेयर किया, तो कौन एलिमेंट आया यहाँ पे? 10. नेक्स्ट इंक्रीमेंट पॉइंटर पी, that is 20 comma 40. What is 20 40? 20. Fine. Next increment pointer p, what is 30 and 40? What is 30 40? 30. Next, next ध्यान से देखो, next p, next is out of array, as it is copy paste. ये एलिमेंट सभी क्या कर दोगे? कॉपी पेस्ट. दैट इज 40, 50 अप टू 100. फाइन. तो कितने कंपैरिजन किए आपने? सपोज करो एरे ए में m एलिमेंट है, एरे बी में n एलिमेंट है. कैन आई say टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन इन मिनिमम ऑफ m को माइन? इन बेस्ट केस कम से कम कितने कंपैरिजन करने पड़ेंगे? मिनिमम ऑफ m को माइन. यस और नो? मिनिमम ऑफ m n. फाइन. वेरी गुड. अब आप ध्यान से देखो, अब आप ध्यान से देखो, इस केस में, इस केस में आपको क्या बेस्ट केस टाइम कितना लगा बच्चे? ओमेगा ऑफ आइदर एम भी मिनिमम हो सकता है, ओमेगा ऑफ मिनिमम ऑफ एम को माइन, ओमेगा ऑफ मिनिमम ऑफ एम को माइन. यस और नो? राइट. सो बेस्ट केस में भी एन लग गया, वर्स्ट केस में भी एन लगा, ऑन एन एवरेज भी इसी के. मिनिमम मीन्स 3 एलिमेंट, मैक्सिमम मीन्स एम प्लस एन. मान लो 3 प्लस 6 7 10 माइनस 1 9 कंपेरिजन लगेंगे. मिनिमम 3, मैक्सिमम 9, ऑन एन एवरेज इसके बीच में ही लगने वाले हैं. यस और नो? इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स टू सॉर्ट, ध्यान से देखना, टू सॉर्ट टू sorted array in a new array, best case is equal to omega of minimum of m comma n, and worst case is equal to big O of either m or big O of n. Yes or no? Yes or no? टू सॉर्ट, टू sorted सब एरे, आपको सॉर्ट करना है दो sorted एरे को न्यू एरे में. So best case is omega of minimum of m comma n, and worst case is big O of m or big O of n. Fine. Very good. So now start merge sort. Now start merge sort. अब पॉइंट देखना बच्चे, मर्ज सॉर्ट में पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वन बाय वन पॉइंट को देखना. मर्ज सॉर्ट में हमें सॉर्टिंग करना है, और एक्चुअल में सॉर्टिंग कौन करेगा? वन प्रोसीजर इज कॉल्ड मर्ज प्रोसीजर. एंड व्हाट इज द गोल ऑफ मर्ज प्रोसीजर? गोल ऑफ मर्ज प्रोसीजर इज टू सॉर्ट टू sorted array in a new array. What is the goal of merge procedure? The goal of merge procedure is to sort करना है किसको? Sorted array को. And how much time it will take? Order of
n in worst case where n is number of element. पॉइंट क्लियर है ये आपको? अभी तक कोई डाउट? एनी डाउट? मर्ज सॉर्ट में एक्चुअल सॉर्टिंग का काम करेगा मर्ज प्रोसीजर, जो टोटल टाइम कितना लेगा, ऑर्डर ऑफ एन, एंड द मर्ज प्रोसीजर वर्क इज टू सॉर्ट टू सॉर्टेड एरे। फाइन, ये भी क्लियर है। और अभी अभी हम देख के आए हैं कि ऑर्डर ऑफ एन टाइम क्यों लगने वाला है। फाइन, इवन दो इट इज थीटा ऑफ एन, बिकॉज मिनिमम मैक्सिमम भी एन है तो थीटा ऑफ एन। फाइन, अब देखो बच्चे मर्ज सॉर्ट वर्क कैसे करेगा। मान लो आपके पास एक एरे है ए, जिसका स्टार्टिंग इंडेक्स है 1, लास्ट इंडेक्स है मान लो 8 एलिमेंट आपके पास। आपके पास एक एरे है ए जिसका फर्स्ट इंडेक्स है 1 और लास्ट इंडेक्स है 8। अब देखो बच्चे, 10, 5, नेक्स्ट 12, 11, नेक्स्ट 10, ठीक है, नेक्स्ट 68, and next is 1, 9। राइट, आपके पास 8 एलिमेंट है। फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स, फिफ्थ इंडेक्स, सिक्स इंडेक्स, सेवंथ इंडेक्स एंड एट्थ इंडेक्स। एक एरे है आपके पास, अनसॉर्टेड एरे है जिसमें आपके पास 8 एलिमेंट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट बिग हैं आपके पास, बहुत बड़े हैं, लार्ज हैं, तो हमने क्या किया, इस एरे को स्मॉल साइज सब एरे में डिवाइड किया। कैसे किया? आपके पास एक एरे था जिसका इंडेक्स 1 था, लास्ट इंडेक्स 8 था। फाइन, यस और नो? आपने क्या किया, इस एरे को टू पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट एरे में कितने एलिमेंट हैं? 1 से लेके 4 तक। सेकंड एरे में कितने एलिमेंट हैं? 5 से लेके 8 तक। यस और नो? नेक्स्ट अगेन आपने इस एरे को टू हाफ में डिवाइड किया। एक एरे ए था जिसमें 1 से लेके 2 एलिमेंट हैं। एक एरे ए है जिसमें 3 से लेके फोर्थ इंडेक्स तक एलिमेंट हैं। नेक्स्ट एक एरे था जिसमें 5 से लेके सिक्स 2 एलिमेंट है आउट ऑफ 4 एलिमेंट। नेक्स्ट ए 7 to 8। टिल सपोज माय प्रॉब्लम इज बिग। तो अगेन आपने क्या किया, इस प्रॉब्लम को डिवाइड किया। एक एरे था जिसमें स्टार्टिंग इंडेक्स 1 है, लास्ट इंडेक्स भी 1 है। नेक्स्ट स्टार्टिंग इंडेक्स 2 था, लास्ट इंडेक्स भी 2 है। इट मीन सिंगल सिंगल एलिमेंट है आपके पास। यस और नो? वेरी गुड। अब आप ध्यान से देखो, अब आप, सॉरी, हाँ, अब ये देखो कि A11 मीन्स यहाँ एरे कौन सा है, एक एरे है जिसमें एक ही एलिमेंट है, दैट इज 10। A22 मीन्स यहाँ एक ही एलिमेंट है, दैट इज 5। एक एरे है जिसमें सिंगल एलिमेंट है 5। यहाँ 12, यहाँ 11, यहाँ 60, देन 8, देन 9, देन 1। यस और नो? पॉइंट क्लियर है ये आपको? अब मर्ज सॉर्ट ने क्या किया, सबसे पहले एक लार्ज बिग साइज प्रॉब्लम थी, उसको स्मॉल साइज में डिवाइड किया। उस प्रॉब्लम को स्मॉल साइज सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया। इट मींस आपने मिडल एलिमेंट निकाला। ए से लेके मिड एलिमेंट एक सब एरे था, मिड प्लस 1 से लेके लास्ट एलिमेंट तक एक न्यू सब एरे है। यस और नो? इटरेटिवली ऐसे हम डिवाइड करते गए, कब तक? जब तक मेरे एरे में सिंगल एलिमेंट ना रह गया। जब तक मेरे एरे में सिंगल एलिमेंट ना रह गया हो। फाइन, अब देखो बच्चे, अब कौन आया यहाँ पे? अब मुझे स्टार्ट करना है सॉर्टिंग। अभी तक हमने स्टार्ट क्या किया है? डिवाइड किया है।
अब हमें कंबाइन करना है, और कंबाइन करने से पहले कंबाइन करते हैं हम सॉल्यूशंस को, हर एक सब प्रॉब्लम के इंडिविजुअल सोल्व करके जो भी सॉल्यूशन आया है उनको कंबाइन करते हैं। तो सबसे पहले सोल्व करना पड़ेगा। यस। अब देखो, अब आपके पास टू सॉर्टेड सब एरे हैं। एक एरे है जिसमें एलिमेंट 10 है, एक एरे है जिसमें एलिमेंट 5 है। क्योंकि एक एरे है इसमें सिंगल एलिमेंट है तो वो सॉर्टेड होगा, ऑलरेडी सॉर्टेड होगा। यस और नो? यस। इट मीन्स आपके पास दो सब एरे हैं जो कि सॉर्टेड हैं 10 और 5। यहाँ क्या अप्लाई करूंगा, दो सॉर्टेड सब एरे को न्यू एरे में सॉर्ट करना है। हाउ मच टाइम इट विल टेक, ऑर्डर ऑफ एन, वेयर एन इज नंबर ऑफ एलिमेंट। अभी नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 1। फाइन। तो सॉर्ट होने के बाद आउटपुट क्या आया, 5 एंड 10। नेक्स्ट, अगेन आपके पास एक एरे था जिसमें एक एलिमेंट है 12, 1 इज 1, तो आपने इन दोनों को सॉर्ट किया तो 11 एंड 12। नेक्स्ट, अगेन आपके पास टू सॉर्टेड सब एरे हैं, उनको सॉर्ट किया 8 एंड 60। एंड अगेन आपने सॉर्टिंग की 1 एंड 9 मींस 1 और 9। यस और नो? अगेन अप्लाई द मर्ज प्रोसीजर। आपके पास टू सॉर्टेड सब एरे हैं, वन इज 5 एंड 10, नेक्स्ट इज 11 एंड 12। प्लीज sort these two sorted sub array in a new array, that means 5, 10, 11 and 12, and again sort these two array, that means 1, 8, 9 and 60, and again sort these two array, that means 1, 5, 9, 10, 11, 12 and 60। yes or no, sorting हुई? yes। अभी तक कोई डाउट? इज देयर एनी डाउट? इट मीन्स हमारे पास एक इनपुट था, उस इनपुट को सबसे पहले हमने डिवाइड किया। इटरेटिवली डिवाइड करने के बाद हमने मर्ज प्रोसीजर को कॉल किया और सॉर्टिंग अप्लाई की। फाइन, वेरी गुड। कैन यू जस्ट टेल मी व्हाट इज द हाइट ऑफ और नंबर ऑफ लेवल ऑफ दिस ट्री? कैन यू जस्ट टेल मी height, number of level? Level is always log n base 2। why? because हमने 2 इक्वल हाफ में डिवाइड किया। फाइन। और हर लेवल पे कितना टाइम लग रहा है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ईच लेवल? हर एक लेवल पे जितना n है, जितना उस टाइम पे पर्टिकुलर एरे में n है, n। यस और नो? the cost is n at each level, and number of level is log n. That's why total time required to sort n element using merge sort is order of n log n, because merge procedure always take order of n time and number of level are log n. That's why time is order of n log n। Is it clear or not? क्या या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आपने कितने एलिमेंट बच्चे सॉर्ट किए? एन। नंबर ऑफ लेवल लॉग एन। एक्चुअल में हमने नंबर ऑफ मूवमेंट नहीं देखा है, बट स्टिल इट विल अगेन इट टेक ऑर्डर ऑफ एन टाइम, राइट? वेरी गुड। एनी डाउट? इट मीन्स सबसे पहले हमने क्या किया, हमने मर्ज सॉर्ट को कॉल किया। हमने मर्ज सॉर्ट को कॉल किया। हमारे पास एक एरे था ए, स्टार्टिंग इंडेक्स आई था, लास्ट इंडेक्स जे था। सबसे पहले आपने क्या किया, क्या सॉर्टिंग स्टार्ट की? नहीं की। इट मीन्स सबसे पहले हमने क्या चेक किया कि मेरी एरे में कितने एलिमेंट हैं। इफ आई इक्वल्स टू जे, रिटर्न ए, एरे को रिटर्न करना है। एल्स आपने क्या फाइंड आउट किया, आपने मिडल एलिमेंट फाइंड आउट किया। हाउ? आई प्लस जे बाय 2। अब आपने क्या किया, क्या आपने सॉर्टिंग स्टार्ट की? नहीं की। आपने सबसे पहले अपने एरे को
टू इक्वल हाफ, ऑलमोस्ट टू इक्वल हाफ में डिवाइड किया विद द बेस ऑन मिडल एलिमेंट। यस और नो? इट मीन्स आपने क्या किया, मर्ज सॉर्ट। आपने क्या किया माय डियर, आपने स्टार्ट किया मर्ज सॉर्ट, फिर से एक एरे आई से लेके कहां तक, मिड एलिमेंट तक। नेक्स्ट अगेन आपने स्टार्ट किया मर्ज सॉर्ट, कहां से, एक एरे से मिड प्लस वन से लेके जे तक। यस और नो? डिवाइड किया किया किया, कब तक, जब तक आपके पास एक एक एलिमेंट नहीं आ गए। अब आपने क्या किया, अब आपने मर्ज प्रोसीजर को कॉल किया। मर्ज प्रोसीजर, एक एरे था जिसमें टू सॉर्टेड सब एरे होते हैं। फर्स्ट सॉर्टेड सब एरे का इंडेक्स आई है, लास्ट इंडेक्स मिडल एलिमेंट है, नेक्स्ट मिड प्लस वन से लेके जे तक। यस, यस और नो? यस और नो? वेरी गुड। अब आप मुझे ये बताओ, अब आप मुझे ये बताओ, जब भी आपने मर्ज प्रोसीजर को कॉल किया, मर्ज प्रोसीजर की बात कर रहा हूं बच्चे, मर्ज सॉर्ट की नहीं, मर्ज प्रोसीजर को कॉल किया, तो क्या आपने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड कॉल किया या दोनों साइड? दोनों साइड। वेरी गुड। ये कितना टाइम लेगा, कांस्टेंट। इस स्टेप को कितना टाइम लगा, कांस्टेंट। इसने एरे को कितने, ऑलमोस्ट n बाई टू पार्ट्स में डिवाइड किया, इसने भी एरे को n बाई टू में डिवाइड किया, बट यहां कितना डिवीजन हुआ, हाउ मच टाइम इट विल टेक, ऑर्डर ऑफ n टाइम, ऑर्डर ऑफ n टाइम, फाइन। वेरी गुड। सो द फाइनल रेकरेंस रिलेशन इज टाइम रिक्वायर्ड, टाइम रिक्वायर्ड to sort an array using merge sort, using merge sort requires how much time, t of n is equal to, एक एरे वन हाफ में डिवाइड हुआ, नेक्स्ट भी हाफ में डिवाइड हुआ, और हर बार कितना टाइम लगा, एन टाइम। व्हाट इज दिस एन टाइम, मर्ज प्रोसीजर टाइम, मर्ज प्रोसीजर टाइम। So it is 2t n by 2 plus n. Can you just tell me what is 2t n by 2 plus n? Yes. Can you just tell me what is 2t n by 2 plus n? क्या होगा? What is 2t n by 2 plus n? What is your final answer? What is the answer for this recurrence relation? अगर हम बात करें, आप किसी से भी अप्लाई कर सकते हो, मास्टर थ्योरम कर सकते हो, ट्री मेथड अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे सब्सटीट्यूशन मेथड भी अप्लाई कर सकते हो। सो कैन यू जस्ट टेल मी व्हाट इज योर फाइनल आंसर? अगर आपने मास्टर थ्योरम अप्लाई की तो ए इज टू विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, बी इज ग्रेटर देन वन। तो अगर आपने अप्लाई, एफ ऑफ एन क्या है, एन है, व्हाट इज एन की पावर log ए बेस बी, एन की पावर log टू बेस टू, एन की पावर वन एन। So f of n and n की पावर log a base b both are equal. So apply case 3. Apply the case 3. So total time is t of n is equal to theta of f of n, that is n into log n. Always multiply with log n in case 3. So answer is n log n. And if we solve using substitution method, time is 2t n by 2 plus n, which is 2 2t n by 2 square plus n by 2 plus n, which is going to be 2 square t n by 2 square plus 2 n by 2 is
n plus n is 2n. Next, 2 square 2t n by 2 square plus n by 2 square plus 2n. 2 cube t n by 2 square plus 2n plus n is 3n. तो जब 3 था यहाँ पे तो यहाँ पे भी n क्यूब आया, 3 आया, 3 आया। जब यहाँ 2 था यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो k टाइम्स अगर एग्जीक्यूट करेंगे 2 की पावर k t n बाई 2 की पावर k प्लस के एन। Let n is equal to 2 की power k, n is equal to 2 की power k, that's why n t n by n plus n dot k. So n dot t of 1 is equal to n dot 1 plus n dot k, and the value of k is log n, so final answer is big of n log n. Yes or no बच्चे? So final merge sort time complexity is n log n. Yes or no? Very good. Very good. So final answer is recurrence relation of merge sort is equal to t2 n by 2 plus n, and the running time is order of n log n. Yes, complete. तो यहाँ पे हमने आज डिस्कस किया बाइनरी सर्च एंड मर्ज सॉर्ट को। तो अगर कंक्लूजन देखें कंप्लीट, अभी तक जितना हमने पार्ट किया है, फर्स्ट प्रॉब्लम हमने फाइंड आउट की power of an element which will take order of log n time. Next, min max problem which will take 1.5n minus 2 when n is even, and when is n is odd it will take 1.5n minus 1.5n 1.5. Third, linear search which will take order of n time. Binary search whose condition is input should be sorted take order of log n time. And the fifth one is merge sort which will take order of n log n time. Yes, तो अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्विक सॉर्ट। अगर आपको कोई भी डाउट है, अभी तक कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी, अभी तक कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। आज इवनिंग में एट 6:30 हम अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे डीबीएमएस के कुछ क्वेश्चंस के थ्रू कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। डीबीएमएस सब्जेक्ट की कंप्लीट रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस मींस हर एक टॉपिक के वहां पे आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। फाइन, क्वेश्चंस के साथ हम कंप्लीट रिवीजन करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं उनको एज ए क्वेश्चन बच्चे पुट किया गया है। तो प्लीज ज्वाइन एट 6:30 अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे। ये क्लास हमारा ऐप पे होगा विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट, सो यू कैन ज्वाइन एट 6:30 टुडे 6:30 इवनिंग। फाइन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो अ बिग अनाउंसमेंट इज फ्रॉम 8th of Feb. From 8th of Feb, yes, after 2 days, CSC for GATE 2022 न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है फॉर सी GATE 2022. Fine, from 8th of Feb. So you can use my code Mukesh YT, MUKESS Mukesh YT to get the maximum discount. Fine, you can use my code Mukesh YT, and for CSC student बैच बी आपका स्टार्ट हो रहा है, राइट, बैच बी फ्रॉम 8th of Feb. यस, तो जल्दी से इस बैच में एडमिशन लें क्योंकि फ्रॉम 8th of Feb आपका बैच न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, आपकी एक भी लेक्चर मिस नहीं होना चाहिए। फाइन, so please use my code Mukesh YT to get the maximum discount. MUKESS Mukesh YT to get the maximum discount. फाइन, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।